गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरञ्जनेश्वरम्। आलाप पद्धतिर्वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। स च किमर्थं? द्रव्यलक्षण सिद्ध्यर्थं स्वभाव सिद्ध्यर्थं च। द्रव्याणि कानि? जीव पुद्गल धर्माधर्माकाश काल द्रव्याणि। सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्युक्तं सत्। लक्षणानि कानि? अस्तित्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं अघृलोत्वं प्रदेशत्वं चेतनत्वम् अचेतनत्वं मूर्तत्वम् अमूर्तत्वं द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। प्रत्येकमष्टौ सर्वेषां ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रसगंध वर्णाः गति हेतुत्वं स्थिति हेतुत्वं अवगाहन हेतुत्वं वर्तना हेतुत्वं चेतनत्वम् अचेतनत्वं मूर्तत्वम् अमूर्तत्वं द्रव्याणां 16 विशेष गुणाः। प्रत्येकं जीव पुद्गलयोः 6 इतरेषां प्रत्येकं 3 गुणाः। अन्तस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षा सामान्य गुणाः विजात्यपेक्षा तएव विशेष गुणाः। गुणविकाराः पर्यायास्ते द्विधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। अर्थ पर्यायास्ते द्विधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। अग्रु लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा षड्वृद्धि रूपा षड्हानि रूपा अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि अनंत गुण वृद्धि इति षड्वृद्धि तथा अनंत भागहानि असंख्यात भागहानि संख्यात भागहानि संख्यात गुणहानि असंख्यात गुणहानि अनंत गुणहानि इति षड्हानि एवं षड्वृद्धि षड्हानि रूपा जेया। विभावार्थ पर्यायाः षड्विधा मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपाध्यवसायाः। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश्चतुर्विधा नर नारकादि पर्यायाः अथवा चतुरशीति लक्षा योनियः। विभाव गुण व्यंजन पर्याया मत्यादयः। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश्चरम शरीरात् किंचिन्न्यू सिद्ध पर्यायाः। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याया अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। पुद्गलस्य तु द्वणकादयो विभाव द्रव्यंजन पर्यायाः। रस रसांतर गंध गंधांतरादि विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः। वर्ण गंध रसैकेका विरुद्ध स्पर्श द्वयं स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायाः। गुण पर्यायवद् द्रव्यं स्वभावः कथ्यन्ते। अस्तिस्वभावा नास्तिस्वभावा नित्यस्वभावा नित्यस्वभावा एकस्वभावा अनेकस्वभावा भेदस्वभावा भेदस्वभावा भव्यस्वभावा भव्यस्वभावा परमस्वभावा एते द्रव्याणाम् एकादश सामान्यस्वभावाः। चेतनस्वभावा चेतनस्वभावा मूर्तस्वभावा मूर्तस्वभावा एक प्रदेशस्वभावा अनेक प्रदेशस्वभावा विभावस्वभावा शुद्धस्वभावा शुद्धस्वभावा उपचरितस्वभावा एते द्रव्याणां 10 विशेषस्वभावाः। जीव पुद्गलयोरेक विंशतिः। चेतनस्वभावा मूर्तस्वभावा विभावस्वभावा शुद्धस्वभावा उपचरितस्वभावा एतेर्विना धर्मादि धर्माधर्माकाशानां त्रयाणां 16 स्वभावाः सन्ति। तत्र बहुप्रदेशत्वं विना कालस्य 15 स्वभावाः। ते कुतो ज्ञेयाः? प्रमाणनय विवक्षातः। सम्यक् ज्ञानं प्रमाणं तद्वेधा प्रत्यक्षेतरभेदात्। अवधि मनः पर्यावेग देश प्रत्यक्षौ केवलं सकल प्रत्यक्षं मति श्रुते परोक्षे तद्वैवा नयाः नय भेदा उच्यन्ते। द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकः नैगमः संग्रह व्यवहारः ऋजुसूत्रः शब्दः समभिरूढः एवं भूत इति नवनया स्मृताः। उपनयाश्च कथ्यन्ते। नयानां समीपा उपनयाः। सद्भूत व्यवहारः असद्भूत व्यवहारः उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्चेत् उपनयास्त्रेधा। इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। उत्पाद व्यय गुणत्वेन सत्ताग्राहका शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यं नित्यं। भेद कल्पना निरपेक्षा शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यमभिन्नम्। कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा।
उत्पाद व्यय सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम् भेद कल्पना सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणाः अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यमस्ति पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यं नास्ति परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परम स्वभावो गृहीत अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदाः अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेर्वादिः सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः सत्ता गुणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिनः सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्या शुद्ध पर्यायार्थिको यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः कर्मोपादि निरपेक्ष स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः संसारिणाः पर्यायाः कर्मोपादि सापेक्ष स्वभावो नित्या शुद्ध पर्यायार्थिको यथा संसारिणाम् उत्पत्ति मरणे स्तः नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात् तीते वर्तमानारोपणम यत्र सा भूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षं गतः भाविनी भूतवत् कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव कर्तुमारब्ध मीशन निष्पन्न मनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र सा वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते संग्रहो द्विधा सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परमविरोधिनी विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधिनः व्यवहारोपि द्विधा सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवाः विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्ताश्च ऋजुसूत्रोपि द्विविधा सूक्ष्मर्जुसूत्रो यथा एक समयावस्थायी पर्यायः स्थूलर्जुसूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायास्तदायुः प्रमाणकालं तिष्ठन्ति शब्द समभिरूढैर्बभूता नयाः प्रत्येकमेकैका नयाः शब्दनयो यथा दाराः भार्या कलत्रम जलम आपः समभिरूढनयो यथा गोः पशुः एवं भूतनयो यथा इंदतीति इंद्रः उपनय भेदा उच्यन्ते सद्भूत व्यवहारो द्विधा शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायणोर भेद कथनम अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुणा शुद्ध गुणिनो रशुद्ध पर्याया शुद्ध पर्यायणोर भेद कथनम असद्भूत व्यवहारस्त्रेधा सुजात्य सद्भूत व्यवहारो यथा परमाणुर बहुप्रदेशीति कथनम इत्यादि विजात्य सद्भूत व्यवहारो यथा मूर्तम अति ज्ञानम यतो मूर्द्रव्येण जनितम सुजाति विजात्य सद्भूत व्यवहारो यथा जे जीवे जीवे ज्ञानमिति कथनम ज्ञानस्य विषयात् उपचरिता सद्भूत व्यवहारस्त्रेधा सुजात्य उपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा पुत्र दारादि मम विजात्य उपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा वस्त्र आभरण हेमरत्नादि मम सुजाति विजात्य उपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देश राज्य दुर्गादि मम सहभुवो गुणाः क्रमवर्तिनः पर्यायाः गुण्यते पृथक्क्रियते द्रव्यं द्रव्याद्यैस्ते गुणाः अस्ति इति एतस्य भावोस्तित्वं सद्रूपत्वं वस्तुनो भावो वस्तुत्वं सामान्य विशेषात्मकं वस्तु द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वं निज निज प्रदेश समूहैरखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान् द्रवति द्रोष्यति अदुद्रवदति द्रव्यं सद्द्रव्य लक्षणं सीदति स्वकीयान् गुणपर्यायान् व्याप्नोति इति सत् उत्पाद वै द्रव्युक्तं सत् प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वं प्रमाणेन स्वपररूपं परिच्छेद्यं प्रमेयम् अग्रुलघोर्भावो गुरुलघुत्वं सूक्ष्मा अवाग्गोचरा प्रतिक्षण वर्तमाना आगम प्रमाण्यादभ्युपगम्या अग्रुलघु गुणाः प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं क्षेत्रत्वम् अभिभागी पुद्गल परमाणुनावष्टब्धं चेतनस्य भावश्चेतनत्वं चैतन्यमनुभवनम् अचेतनस्य भावो चेतनत्वम् अचैतन्यमनुभवनम् मूर्तस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिमत्वम् अमूर्तस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिरहितत्वं स्वभाव विभाव रूपतया याति परेति परिणमतीति पर्यायः
स्वभाव लाभादच्युत स्वभावादस्ति स्वभावः परस्वरूपेणा भावान् नास्ति स्वभावः निज निज नाना पर्यायेषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भा नित्य स्वभावः तस्याप्यनेक पर्याय परिणामित्वादनित्य स्वभावः स्वभावानामेकाधारत्वादेकः स्वभावः एकस्यापनेक स्वभावोपलम्भादनेकः स्वभावः गुणगुण्यादि संज्ञादि भेदाद भेदः स्वभावः गुणगुण्यादेकः स्वभावादभेदः स्वभावः भावी काले परस्वरूपाकार भवनात् भव्यः स्वभावः कालत्रयेपि परस्वरूपाकारा भवनादभव्यः स्वभावः पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परमः स्वभावः प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर्निगदिता धर्मापेक्षा स्वभावा गुणाना भवन्ति स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षा परस्परं गुणाः स्वभावा भवन्ति द्रव्याण्यपि भवन्ति स्वभावादन्यथा भवनं विभावः शुद्धं केवलभावमशुद्धं तस्यापि विपरीतं स्वभावस्यन्यत्रोपचारादुपचरितः स्वभावः सद्वेधा कर्मज स्वाभाविक भेदात् यथा जीवस्य मूर्तत्वमचेतनत्वं यथा सिद्धात्मनां परज्यता परदर्शकत्वं च एवमितरेषां द्रव्याणामुपचारो यथा संभवो ज्ञेयः तत्कथं सर्वथैकान्तेन सद्रूपस्य न नेतार्थ व्यवस्था संकरादि दोषत्वात् तथा सद्रूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात् नित्यस्य एकरूपत्वादेकरूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः अनित्यपक्षे भी निरन्वयत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्यापि भावः एक स्वरूपस्य एकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैकरूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्यापि भावः अनेक पक्षेपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेयाभावाच्च भेदपक्षेपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वादर्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः अभेदपक्षेपि सर्वेषामेकत्वं सर्वेषामेकत्वेऽर्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः भव्यस्यैकान्तेन परिणामिकत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यान्तरत्वप्रसंगात् संकरादि दोष संभवात् सर्वथा भव्यस्यैकान्तेऽपि तथा शून्यता प्रसंगात् स्वस्वरूपिणाप्यभवनात् स्वभावस्वरूपस्यैकान्तेन संसाराभावः विभावपक्षेऽपि मोक्षस्याप्यभावः सर्वथा चैतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्धज्ञानचैतन्यव्याप्तिः स्यात् तथा सति ध्यानं ध्येयं ज्ञानं ज्ञेयं गुरुः शिष्यादि अभावः सर्वथा शब्द सर्वप्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची वा अनेकांत सापेक्षी वा यदि सर्वप्रकारवाची सर्वकालवाची अनेकांतवाची वा सर्वादिगणे पठनात् सर्वशब्द एवं विदश्चेतर्हि सिद्धं न समीहितम् अथवा नियमवाची चेत्तर्हि सकलार्थानां तव प्रतीति कथं स्यात् नित्यः अनित्यः एकः अनेका भेदा अभेदा कथं प्रतीति स्यात् नियमितपक्षत्वात् तथा चैतन्यपक्षेऽपि सकल्यचैतन्योच्छेदः स्यात् मूर्तस्यैकान्तेन आत्मनो न मोक्षस्य अवाप्तिः स्यात् सर्वथा मूर्तस्यापि तथात्मनः संसार विलोपः स्यात् एक प्रदेशस्यैकान्तेन अखंड परिपूर्णस्यात्मनो नेक कार्यकारित्व एव हानि स्यात् सर्वथा नेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्यानर्थ कार्यकारित्वं स्वस्वभाव शून्यता प्रसंगात् शुद्धस्यैकान्तेन आत्मनो न कर्म मल कलंकावलेपः सर्वथा निरंजनत्वात् सर्वथा शुद्धेकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगा स्यात् तन्मयत्वात् उपचरितेकान्तपक्षेऽपि नात्मज्यता संभवति नियमितपक्षत्वात् तथात्मनो नुपचरितपक्षेऽपि परज्यतादीनां विरोधः स्यात् स्वद्रव्यादिग्राहकेणास्ति स्वभावः परद्रव्यादिग्राहकेण नास्ति स्वभावः उत्पाद व गुणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वभावः केनचित् पर्यायर्थिकेनानित्यस्वभावः भेदकल्पना निरपेक्षेणैकस्वभावः अन्वयद्रव्यार्थिकेनेकस्यापनेकद्रव्यस्वभावत्वं सद्भूत व्यवहारेण गुणगुण्यादिभिर्भेदस्वभावः भेदकल्पना निरपेक्षेण गुणगुण्यादिभिरभेदस्वभावः परम भावग्राहकेण भव्याभव्य परिणामिकस्वभावः
शुद्धाशुद्ध परम भाव ग्राहकेण चेतन स्वभावो जीवस्य असद्भुत व्यवहारेण कर्म नो कर्मणोरपि चेतन स्वभावा परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणो रचेतन स्वभावा जीवस्याप्यसद्भुत व्यवहारेण चेतन स्वभावः परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणोर्मूर्त स्वभावा जीवस्याप्यसद्भुत व्यवहारेण मूर्त स्वभावा परम भाव ग्राहकेण पुद्गलं विहाय इतरेषा ममूर्त स्वभावा पुद्गलस्योपचारादेवास्त्यमूर्तत्वम् परम भाव ग्राहकेण काल पुद्गलाणूनामेक प्रदेश स्वभावत्वम् भेद कल्पना निरपेक्षेण इतरेषां चाखंडत्वादेक प्रदेशत्वम् भेद कल्पना सापेक्षेण चतुर्णामपि नाना प्रदेश स्वभावत्वम् पुद्गलाणोरुपचारतो नाना प्रदेशत्वं न च कालाणोः स्निग्धरुक्षत्वाभावात् ऋजुत्वाच्च अणोरमूर्त कालस्येक विंशतितमो भावो न स्यात् परोक्ष प्रमाणापेक्षया सद्भुत व्यवहारेणाप्युपचारेणामूर्तत्वं पुद्गलस्य शुद्धाशुद्ध दिव्यार्थिकेन स्वभाव विभावत्वं शुद्ध दिव्यार्थिकेन शुद्ध स्वभावः अशुद्ध दिव्यार्थिकेनाशुद्ध स्वभावः असद्भुत व्यवहारेण उपचरित स्वभावा सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम प्रमीते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम एन ज्ञानेन तत्प्रमाणम तद्वेधा सविकल्पेतर भेदात् सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम मतिश्रुतावधि मनः पर्याय रूपम निर्विकल्पम मनोरहितम केवलज्ञानम प्रमाणेन वस्तु संगृहीतार्थेकांशो नयः शुद्ध विकल्पो वा जातुरभिप्रायो वा नयः नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नयः सद्वेधा सविकल्प निर्विकल्प भेदात् प्रमाणनयोर्निक्षेपणम् आरोपणं निक्षेपः स नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विधः द्रव्यमेवार्था प्रयोजन मस्येति द्रव्यार्थिका शुद्ध द्रव्यमेवार्था प्रयोजन मस्येति शुद्ध द्रव्यार्थिका अशुद्ध द्रव्यमेवार्था प्रयोजन मस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थिका सामान्य गुणादयोन्वय रूपेण द्रव्यम द्रव्यमिति व्यवस्थापयति अन्वय द्रव्यार्थिका स्वद्रव्यादि ग्रहणमर्थ प्रयोजन मस्येति स्वद्रव्यादि ग्राहका परद्रव्यादि ग्रहणमर्थ प्रयोजन मस्येति परद्रव्यादि ग्राहका परम भाव ग्रहणमर्थ प्रयोजन मस्येति परम भाव ग्राहका पर्याय एवार्था प्रयोजन मस्येति पर्यायार्थिका अनादि नित्य पर्याय एवार्था प्रयोजन मस्येत्यानादि नित्य पर्यायार्थिका सादि नित्य पर्याय एवार्था प्रयोजन मस्येति सादि नित्य पर्यायार्थिका शुद्ध पर्याय एवार्था प्रयोजन मस्येति शुद्ध पर्यायार्थिका अशुद्ध पर्याय एवार्था प्रयोजन मस्येत्यशुद्ध पर्यायार्थिका नैकं गच्छति इति निगमः निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगमः अभेदरूपतया वस्तुजातं संगृह्णाति ति संग्रह संग्रहेण गीतार्थस्य भेदरूपतया वस्तु व्यवह्रियते इति व्यवहारः ऋजु प्राञ्जलं सूत्रयति इति ऋजुसूत्रः शब्दात् व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धः शब्दनयः परस्परेणाभिरूढाः समविरूढाः शब्दभेदेप्यर्थभेदो नास्ति यथा शक्र इंद्रः पुरंदर इत्यादयः समविरूढाः एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयते इति एवं भूतः शुद्धाशुद्धनिश्चयो द्रव्यार्थिकस्य भेदौ अभेदानुपचरितया वस्तु निश्चीयते इति निश्चयः भेदोपचरितया वस्तु विभ्रीते इति व्यवहारा गुणगुणिनो संज्ञादि भेदाद् भेदका सद्भूत व्यवहारा अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूत व्यवहारा असद्भूत व्यवहारा एवोपचारः उपचारादप्युपचारं यः करोति स उपचरिता सद्भूत व्यवहारा गुणगुणिनोः पर्याय पर्यायिनोः स्वभाव स्वभाविनोः कारक कारिकणोर्भेदः सद्भूत व्यवहारस्यार्थः द्रव्ये द्रव्योपचारः पर्याये पर्यायोपचारः गुणे गुणोपचारः द्रव्ये गुणोपचारः द्रव्ये पर्यायोपचारः गुणे द्रव्योपचारः गुणे पर्यायोपचारः पर्याये द्रव्योपचारः पर्याये गुणोपचारः इति नवविधोपचारः असद्भूत व्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्यः उपचारः पृथक् नयो नास्तीति न पृथक् कृतः मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते सोपि संबंधो विनाभावः संश्लेषः संबंधः परिणाम परिणामी संबंधः श्रद्धा श्रद्धे संबंधः ज्ञान जे संबंधः
चारित्रचर्या संबंधाश्चैत्यादि सत्यार्था असत्यार्था सत्यासत्यार्थाश्चेत्युपचरिता सद्भूत व्यवहार नयस्यार्थः पुनरप्यध्यात्म भाषया नया उच्यन्ते तावन् मूलनयो द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च तत्र निश्चयनयो भेदविषयो व्यवहारो भेदविषयः तत्र निश्चयो द्विविधः शुद्धनिश्चयो शुद्धनिश्चयश्च तत्र निरुपाधि गुणगुण्यभेदविषयकः शुद्धनिश्चयो यथा केवल ज्ञानादयो जीविति सोपाधिक विषयो शुद्धनिश्चयो यथा मति ज्ञानादयो जीविति व्यवहारो द्विविधा सद्भूत व्यवहारो सद्भूत व्यवहारश्च तत्र एक वस्तु विषया सद्भूत व्यवहारा भिन्न वस्तु विषयो सद्भूत व्यवहारा तत्र सद्भूत व्यवहारो द्विविधा उपचरितानुपचरित भेदात् तत्र सोपाधिक गुणगुणिनोर्भेद विषया उपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणाः निरुपाधि गुणगुणिनोर्भेद विषयो नुपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य केवल ज्ञानादयो गुणाः असद्भूत व्यवहारो द्विविधः उपचरितानुपचरित भेदात् तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देवदत्तस्य धनमिति संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयो नुपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति।